These are some quick revision pages which are very important one day before exam. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन इन डेज रिवीजन सीरीज। और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं इन डेज टू इन्वेंटरीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को ठोकाइए। हम जल्दी से शुरू करते हैं। Great. I hope you guys are back. Let's start. Now, what is the objective of IND AS 2? It is to prescribe accounting treatment of inventories. अब inventories क्या होते हैं? Inventories तीन तरह के होते हैं. One is finished goods, which are held for sale in ordinary course of business. Any retail merchandise, any completed products are called finished goods. Second होते हैं work in progress, जिनका production अभी in process है. Those in production or process of such sale are called work in progress. And third are raw materials to be consumed in the production process. These are called inventories. ठीक है, अभी इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज एन इन्वेंटरी और नो। सो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है? सपोज आप कोक का एक कैन ले रहे हैं, तो वो जो कैन है, is it part of your inventory? Is it a raw material or no? क्योंकि that can is ideally a waste. It is not a finished product of the company, right? तो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि it is essential to bring inventory to the saleable condition. तो we have to include it as part of inventory. But अगर कोई secondary और publicity material है, जैसे if there are any carton boxes, तो those will be expensed off in P&L. Those will not form part of my inventory. ठीक है, अभी द गोल्डन रूल टू मेजर इन्वेंट्री, राइट? ये हम इंटर से पढ़ते हैं दैट इन्वेंट्री विल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, अभी कॉस्ट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज समथिंग विच इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. हाउ मच द एंटिटी इज एक्सपेक्टिंग टू रियलाइज बाय सेलिंग दैट फिनिश्ड गुड्स is called net realizable value after deducting all the selling costs. ठीक है, अभी there are some measurement exclusions. इनके एग्जांपल्स हमने देखे थे इन इन्वेंटरीज. चलिए देख लेते हैं एक बार. Yes, so these are exempt from the lower of cost or net realizable value formula in inventory. पहला क्या है? Any producers of agricultural produce. ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था wheat farmer का, where suppose if a wheat farmer is growing 1000 tons of wheat. अब उस wheat को ग्रो करने के लिए he will be using seeds, he will be using fertilizers that might not be specifically attributed to individual ton of wheat. करेक्ट? तो इन दैट केस हमारा IND AS 2 का रूल क्या कहता है? नॉर्मली ये कहता है कि allocate every cost to 1000 tons of wheat, which is practically not possible. तो इन दैट केस एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस IND AS ने ऐसा कहा है कि ऐसी इन्वेंट्री को यू विल मेजर एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट एस्टिमेट कि उसमें कितना कॉस्ट लगा है. समझे? अभी हो सकता है फार्मर ने अपनी मेहनत की हो, because not only there is a seed and fertilizer, but there are many other costs which you cannot measure for growing wheat. ठीक है, तो in that case we measure the wheat at, or we measure any agricultural produce at net realizable value, selling cost minus my cost to sell. ठीक है, now second is commodity broker trader. so इसके लिए हमने लिया था एग्जांपल ऑफ अ गोल्ड ट्रेडर. ठीक है, तो व्हाट गोल्ड ट्रेडर डज, a commodity broker trader, he buys gold when he is expecting there is a price hike. Correct? So he buys gold for short term profit. He is not regularly buying and selling gold. Correct? अब इसके लिए बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू क्या रहेगा? माय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू विल बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. गोल्ड की जो भी फेयर वैल्यू है माइनस माय कॉस्ट टू सेल will be my best estimate of inventory value. It will not be cost. Sir, why? Why? Because gold की value हर दिन बदलती रहती है. Similarly, any other commodities, right? Even silver, even aluminium, copper, every commodity has a change in value every day. Correct? So in that case, the best estimate of the value will be fair value less cost to sell. And इसके लिए
दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए दिस इज डन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इन्वेंट्री हैज टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऊपर से देखा, बट कॉस्ट क्या होता है? अब कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री हैज थ्री थिंग्स। वन इज कॉस्ट ऑफ परचेज, आपका परचेज करने में कितना कॉस्ट लगा है। सेकंड, आपका उस इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगा है। एंड थर्ड इज एनी अदर कॉस्ट टू bring the inventory to the location or condition necessary। ठीक है, नाउ माय फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इसके लिए हमने दे रखा है व्हाट ऑल टू कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ परचेज एंड व्हाट ऑल नॉट टू कैपिटलाइज। योर परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, एनी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है, कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय कॉस्ट, बट इन केस ऑफ एनी रिफंडेबल टैक्सेस यू विल डिडक्ट और यू विल रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट। ठीक है, कोई भी फ्रेट या कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो आप उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, बट इन केस ऑफ एनी अबनॉर्मल कॉस्ट और कैश डिस्काउंट्स यू विल नॉट चार्ज इट टू इन्वेंट्री, यू विल चार्ज इट टू P&L। ठीक है, आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, आप P&L में चार्ज करोगे। सेकेंड आता है माई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? एनी डायरेक्ट मटेरियल, एनी डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। All the cost to convert my raw material to finished goods will form part of cost of conversion। ठीक है, अभी इसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी वेरिएबल ओवरहेड्स है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दैट विल बी allocated based on actuals। ठीक है, पर in case of fixed overheads, now this is a main point, this is a very important point, in case of fixed overheads you will allocate the fixed overheads on the basis of either actual capacity or normal capacity, whichever is higher। okay, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, let's see the example। यस, सो हमने लिया था एग्जांपल ऑफ अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हु इज मैन्युफैक्चरिंग अ वुडन चेयर। उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, ही मैन्युफैक्चर्स 100 चेयर्स पर मंथ। उसका फिक्स्ड ओवरहेड लगता है फॉर रेंट ऑफ द फैक्ट्री और मशीनरी डेप्रिसिएशन अराउंड 50,000 per month। His variable overheads are 500 per chair for any electricity or glue charges or any raw materials, and his direct labor charges are 1,500 per chair। right, तो हम direct labor or variable overheads we can identify directly to per chair, so we will allocate these respective costs to per chair। but let's see how do we allocate the fixed overheads। okay, situation number 1, हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ, वी मैन्युफैक्चर्ड 100 chairs, what was our capacity। अब in that case what will happen, as I said, direct labor and variable overheads are allocated based on their individual prices। okay, but fixed overheads हमने बोला था नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी whichever is higher, इसमें सेम है, so we are allocating based on the same capacity 100। okay, so my per unit fixed overheads cost is allocated as 500 and totally it is allocated as 50,000, giving my total cost as 2,50,000 and my per unit chair cost as 2,500। okay, simple case। अब second आता है अंडर प्रोडक्शन। ठीक है, now if my normal capacity is 100 units but I have produced only 80 यूनिट्स, इन दैट केस व्हाट वी विल डू। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि यू विल अलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर। अभी नॉर्मल कैपेसिटी इसमें कितनी है? 100 यूनिट्स। एक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअल कितनी है? 80 यूनिट्स। तो हायर क्या हुई? 100 यूनिट्स। सो यू विल अलोकेट द फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन दिस 100 यूनिट्स। सर वो 20 यूनिट्स का क्या हुआ? विल सी अहेड। सो फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट लेबर, आपने अलोकेट कर दिया 1,500 पर चेयर फॉर 80 यूनिट्स, 1,20,000। वेरिएबल ओवरहेड्स 500 पर चेयर फॉर 80 यूनिट्स, 40,000। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स आपने अलोकेट किया बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बिकॉज दिस वाज हायर,
So you allocated 500 rupees per chair, but you allocated only for 80 chairs giving 40,000. ओके, सो आपका जो 10,000 अनअलोकेटेड बचा है, जो 50,000 वेरिएबल ओवरहेड्स आपने इनकर किए थे, बट 40,000 ही अलोकेट किया है आपने अपने प्रोडक्ट पर. सो द 10,000 unabsorbed overheads of 10,000 you will immediately charge to profit and loss. Okay. थर्ड थिंग, अगर ओवर प्रोडक्शन हुआ है, इफ इंस्टेड ऑफ 100 यूनिट्स आई हैव प्रोड्यूस्ड 125 यूनिट्स इन दैट मंथ, in that case what will happen, हमने देखा either actual capacity or normal capacity whichever is higher, basically 125 is higher actual capacity, तो हम उसके बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलोकेट कर देंगे. हमारा डायरेक्ट लेबर लग गया, वेरिएबल ओवरहेड्स लग गया 1500 and 500 per chair, but fixed overheads we have allocated based on my actual capacity which is 50,000 divided by 125, तो हमारा लगा only 400 per chair. अब देखिए पहले हमारा लगा था 500 पर चेयर फिक्स्ड ओवरहेड्स, यहाँ पे बिकॉज माई कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स लगा है 400 पर चेयर, एंड वी हैव अलोकेटेड टू 125 चेयर्स अलोकेटिंग एंटायर 50,000 ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओके, क्लियर, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमने देखा फिक्स्ड ओवरहेड्स allocate based on actual normal whichever is higher. अंडर प्रोडक्शन के केस में बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बिकॉज नॉर्मल विल बी हायर, एंड इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी बिकॉज एक्चुअल विल बी हायर. ओके, अगर कोई भी अदर कॉस्ट होती है, सो दैट विल बी इंक्लूडेड ओनली इफ इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंटरीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल एजिंग ऑफ विस्की, अगर यूजुअली आप इस बिजनेस में हैं तो आपको विस्की को एज करना पड़ता है, यू हैव टू एज इट फॉर 10 years 12 years, that is very necessary to bring the product to saleable condition, right? So in that case even that cost will form part of my cost of inventory. Okay, next, अगर कोई deferred settlement terms है, if you are paying for the inventory after 1 year or 2 years, the cost will be the cash price equivalent, and in case if there are any borrowing cost, we will see it as per IND AS 23 borrowing cost. Now there are some costs which are strictly excluded from the cost of inventory. कोई भी abnormal cost, we saw it before, कोई भी abnormal cost of wasted material is not part of inventory. अगर कोई storage cost है, unless necessary in production process, जैसे हमने we saw for production of whiskey, because it was necessary, then that will be forming part of my cost of inventory. But apart from that, if there is any storage cost or warehousing cost, so that will not form part of my inventory. अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, एंड इफ देयर आर एनी सेलिंग कॉस्ट लाइक सेल्स कमीशन और फ्रेट, that will not form part of inventory. Now this is only outward freight, but अगर कोई inward freight है which is necessary to bring the inventory to location and condition, that will be forming part of my inventory cost. Okay, next है joint products and by products. Okay, when conversion costs are not separately identifiable, आप joint products को कैसे allocate करोगे? You will allocate based on any rational basis. For example, relative sales value at split off point. And अगर कोई immaterial by products है, so you will measure them at NRV. You will deduct this NRV from the cost of main product. अभी इसके लिए भी हमने एक example लिया था. Let's see the example. Yes. So we saw the example of converting milk to curd and buttermilk. So हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है where we manufacture curd from milk. ठीक है. Now in this process we also manufacture buttermilk together with curd. अभी because the economic value of both of these products is significant, that is why we will call them as joint products. हमने क्या पढ़ा था? The cost of raw material, the cost of the milk will be allocated to joint products in the ratio in any rational basis. एंड यहाँ पे रैशनल बेसिस क्या है? इन रेशियो ऑफ द रिलेटिव सेलिंग प्राइसेस. तो हमने वैसे इन्हें अलोकेट कर दिया 100. द कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज अलोकेटेड बिटवीन 100 and 300 गिविंग 25 and 75.
Now, suppose if there is any byproduct, assuming butter has a insignificant value, ठीक है, its NRV is 40. So during the process, this byproduct of butter is also formed. तो in that case what we will do, जो भी हमारा cost of raw material है milk, उसमें से we will reduce the NRV of this byproduct. Okay, so we reduced 40 from 100, which was the cost of the milk. The net value of 60 is something which we will allocate between curd and buttermilk. Understood? Clear? ठीक है, चलिए let's move ahead. We saw joint products and byproducts. Now, cost formulas. There are some specific cost formulas suggested by IND AS 2. First is specific identification method. If you are able to identify the cost of the inventory specifically, तो आप उस cost को उसी पे allocate करोगे, ठीक है? Next is first in first out. If you're not able to specifically identify the cost, तो you will assume the oldest items are sold first. आप FIFO method लगाओगे, or either you can also use weighted average cost method. ठीक है? Always आप net realizable value को item by item basis पे measure करोगे. ठीक है? Next is write down of inventories to net realizable value. ठीक है? Inventories normally कब write down होती है? जब उनकी cost is no longer recoverable. अब how is this that its cost is no longer recoverable? Suppose आपने एक कोई inventory का finished goods बनाया and that finished goods is not even giving you profit. अगर वो finished goods आपका loss में बिक रहा है, तो it means जो आपकी raw material की cost है, you are not able to recover that cost from the finished goods. Correct? तो in that case inventories must be written down. ठीक है? कुछ ट्रिगर्स है रिटर्न डाउन के. राइट डाउन कब होता है? व्हेन इन्वेंटरीज आर डैमेज्ड, व्हेन दे बिकम होली और पार्शियली ऑब्सोलीट, अगर कोई मार्केट सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हुई है, एंड अगर कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हैव इंक्रीज. ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या फिर सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई है तब. सो इन केस ऑफ एनी राइट डाउन यू विल expense the cost of inventory directly. Now this is important, raw material write down rule. Okay, so अगर आपके finished goods are expected to sold at or above cost, तो you will not write down the value of your raw material. But in case if there are loss making finished goods, अगर आपके finished goods आपको profit margin नहीं दे पा रहे हैं, if they are loss making, then you will value your raw material at replacement cost always. Okay, then reversal of write down. You have to assess your net realizable value in every subsequent period. And अगर आपको लगता है कि net realizable value increase हो चुकी है and the factors which we saw before, the triggers, have been reversed, so in that case any previous write down is reversed. Okay, now recognition as an expense. आप inventory को कब expense करते हो? When you sell. What do you mean by selling? Suppose you are selling your raw material and you're recognizing your revenue. So what entry you will pass? You will pass accounts receivable to revenue, right? But you will also be giving the inventory or the finished products to the customer, right? So in that case, you will also pass an entry cost of goods sold to inventory. ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज पास होती है व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट. आपका कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाता है, आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है, any receivable will be recorded and the inventory which goes out is also recorded. ठीक है, so carrying amount is recognized as an expense when the related revenue is recognized. अगर कोई abnormal loss है, any abnormality you have to charge to P&L. ठीक है, हाँ. if any inventories कंज्यूम्ड इन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बना रहे हैं एंड उसमें आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है, लाइक हाउ वी सॉ द फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एग्जांपल, सो इन दैट केस यू विल कैपिटलाइज द इन्वेंट्री टू द पीपीई. ठीक है, these are some quick revision pages which are very important one day before exam. First, how do you capitalize inventory? You start with your vendor invoice. आपकी purchase price क्या थी? Plus you add your duties minus any
ट्रेड डिस्काउंट्स. एनी इनवर्ड कॉस्ट, एनी फ्रेट इनवर्ड्स या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड हैंडलिंग कॉस्ट यू विल कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि they are necessary to bring the inventory to the location and condition. Okay, any conversion cost from raw material to finished products जो हमने देखा था, you will capitalize in inventory, but you will not add any abnormal spoilage, any admin overhead, selling costs and storage costs. ठीक है, coming to formulas, how do you measure inventory? Lower of cost or net realizable value. Net realizable value क्या होती है? Expected selling price minus cost to complete minus selling expenses. Fixed overhead absorption rate, आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, ये हमने एग्जांपल में देखा था. बट अगर कोई आइडल कैपेसिटी है तो अनअब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ट्रांसफर्ड टू P&L. एंड देन मेन प्रोडक्ट की नेट कॉस्ट क्या होती है? टोटल जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड माइनस नेट माइनस एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, these are some exam points which are important. First is raw material. Never write down raw material if the final product is profitable. आपका finished goods अगर profitable है तो you will not write down raw material. But अगर आपका finished goods loss making है तो you'll have to value raw material at replacement cost. Cost formula, LIFO is completely prohibited. You cannot use LIFO under IND AS 2. कोई भी broker trader है, you will have to measure at fair value less cost to sell. ठीक है, and in case if there are any producers of any agricultural produce, then you'll have to measure at net realizable value. Deferred payments, you'll have to measure at cash price equivalent, and in case of reversals, reversal allowed hai but it is capped at original cost. Okay, thank you, we'll see you in next revision video.